relationship of kinetic energy with momentum. Let's say we have the kinetic energy as half mv square, and the momentum is mass into velocity. The momentum is mass into velocity. Show that kinetic energy is equal to p square over 2m. मतलब आपने शो करना है कि E k is equal to p square over 2m. P is the momentum, m is the mass. That kinetic energy is half mv square, right? Momentum में अगर आप v को सब्जेक्ट बना लें, v को, तो ये हो जाएगा p over m. If I can make v the subject, I can put this here in this expression, and this becomes what? This becomes half multiplied by m multiplied by p over m whole square. So this is half into m into p square over m square. Half, ये m इससे कट जाएगा, so ये हो जाएगा p square over m. So this becomes p square over the gravitational potential energy. What is gravitational potential energy? If you raise an object, the object will gain some energy, right? And the energy possessed by an object due to virtue of its position in the gravitational field, आप उसको किसी चीज को उठाते हैं और उसको आप रेज करते हैं, right? So the energy possessed, yes, by an object due to its position in the gravitational field is known as the gravitational potential energy, right? If you have an object here and we raise this object to a certain height, so its center of gravity is raised, let's say this height is delta H. Delta means, this fancy symbol here means change. So this is equal to the displacement here, right? So this S is what we call the displacement, right? So you should know that if we apply if the weight is here, which is mg, and the force is F, which is here, you should know it by all means that this, let's say this force is equal to mg, then the work done would be what? Force into displacement. अच्छा, ये force किसकी equal है? mg के. और displacement किसकी equal है? H या delta H. So this is the work done, and this work done is equal to mg delta H. This is the work done against gravity. This is known as gravitational potential energy. This is mg delta H, right? We call this the work done. So work done against gravity is equal to gravitational potential energy. Subsequently, you should know that gravitational potential energy is mgh. Gravitational potential energy is mg delta H. I have here an object and we move this object. आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव करते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट है s, ठीक है, और इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे mg. अगर आपने इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh. इट्स ऑलवेज द वर्टिकल हाइट. चाहे आप उसको इस तरह से मूव करवाएं, चाहे आप उसको इस तरह से मूव करवाएं, it's always the vertical height from the center of gravity that matters. It's always, this is the concept. No, ये मैटर नहीं कर रहा है. आप यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे आए हैं, उसके दरमियान में जो वर्टिकल हाइट है वो मैटर कर रही है. तो दिस इज द वर्टिकल हाइट व्हिच मैटर्स. इट डजंट मैटर आप उसको इधर से उधर ले गए, उधर से उधर ले गए. It's always the vertical height. So this formula is mg delta H here. ठीक है, तो ये आपको, this would be mg into H. The gravitational potential energy is mgh. If we have a slope here like this, let's say we have a slope here all the way, and let's say there's an object here, and you move this object from here to here all the way, right? The weight is mg, you apply a force F, it moves a displacement S here, right? And this height that it has gained is, let's say, delta H. That's the work done by force F, number one.
And what is the work done against gravity? What is the work done by force F? F into S होगा work done by force F. आप F into H नहीं कर सकते. ठीक है, work done by force F is F into S. And work done by the gravity mgh, क्योंकि mgh की डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में है. ठीक है, so that is mgh और mg delta h. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि चाहे आप ऑब्जेक्ट को उठा के यहां से इस तरह से यहां पे ले आए, ये सारा जो डिस्टेंस है डजंट मैटर. ठीक है, इट रियली डजंट मैटर. Only this vertical height that matters. Remember that. 300 Newton force is applied to a box to move it up a ramp, as shown. How much work is done by the force when moving the box from x to y? 300 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में. 1500, राइट? किस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? बी पर. जहां पे हाइट ज्यादा होगी वहां पे हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी. टू एल. अगर यहाँ पे W इंटू एच होता तो वो भी ठीक होता, लेकिन W इंटू एच की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि W इंटू एच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो F इंटू एल, जिस फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में. क्लियर है ये सबको कॉन्सेप्ट? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. You should know that energy, I'm going to write here, energy can neither be created or destroyed in any process. It can be converted from one form to another or transferred from one body to another. Transferred from body to another, but the total amount remains the same. ठीक है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन द प्लेयर हिट्स द बॉल, राइट? देयर इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, बैट्समैन के अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसको वो इस तरह से करेगा, राइट? इज दैट क्लियर एवरीवन? But the total amount. Sir, does friction or air resistance affect the amount of energy? एक सेकेंड बेटा, जो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस होता है ना, उससे वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. Friction and air resistance converts that energy into thermal energy. ठीक है, heat energy. If you have a diver using a springboard, so the chemical potential energy of the diver converts into elastic potential energy of the springboard. उससे फिर वो ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर वो काइनेटिक एनर्जी में. और जब वो पानी के अंदर गिरता है तो स्प्लैश होता है, तो साउंड प्लस थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, एयर में भी थर्मल एनर्जी कुछ होती है. So what happens is, let's say if there is a diver here, this is the springboard, and what happens is that this diver is here. The major energy conversions are a diver on a springboard. सबसे पहले क्या होगा? Chemical potential is converted into elastic potential energy. That is converted into gravitational potential energy of the diver. That is further converted into kinetic energy. That is converted and then he jumps into the water. Sound plus thermal energy. Thermal is the heat energy, right? These are the basic energy conversions when a diver goes into the water. Number 2, we have अगर कभी आपने साइकिलिंग की हो स्लोप के ऊपर, ठीक है, कभी हिली एरिया पे जाए, a cyclist going downhill, right? Let's say there is a cyclist here. This is the ramp. Let's say we have here the cyclist all the way. Cyclist is going downhill. Can you tell me what sort of energy conversions would take place? Chemical potential energy, say gravitational potential energy, say kinetic, is converted into gravitational potential energy. That is converted into kinetic energy. That is converted into heat and sound energy, right? Thermal energy plus sound energy. So you should know that if a cyclist is moving at a constant speed, if a cyclist is moving, no change in kinetic energy. There is
no change in kinetic energy. Remember that. Number 3, a cyclist is moving uphill. Just moving uphill. So let's say this is the ramp that we have. And we have here the cyclist all the way. It's going all the way like this. So the major energy conversions would be chemical potential energy is converted into what? Kinetic energy, and that is converted into gravitational potential energy, and that is converted into heat, which is the thermal. ठीक है Ibrahim Fuad? Plus sound. Number 4, we have burning of fossil fuels such as coal, oil, and wood. ये stored chemical energy उसके अंदर होती है. That is converted into heat and light energy, right? Number 5, connecting. This is linked with electricity. Inshallah, when we'll do electricity, you will get to know this. Connecting a battery to a filament lamp. So basically, when you have a battery here like this is the battery that we have. We have the bulb here all the way. And what's happening is that there is some electrical energy here. पहले सबसे पहले तो केमिकल एनर्जी होगी सेल के अंदर, फिर इलेक्ट्रिकल, और फिर उससे हीट और लाइट. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टोर्ड केमिकल एनर्जी in the battery is converted into, and that is converted into heat, which is the thermal, plus light energy. बेटा बैटरी जो होती है ना, हम अब इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर ना केमिकल एनर्जी होती है. बैटरी के अंदर कोई भी सेल होता है ना, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है. अब ये केमिकल एनर्जी की वजह से जब चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास होती है. हम ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको. ये एनर्जी जब ये अपने साथ एनर्जी लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जब इसमें से करंट जाएगा. उसके बाद जब ये बल्ब से पास करेगा तो बल्ब में हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये एक तरह का रेजिस्टर है. वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन इज माय फेवरेट. ठीक है, सो यू विल एंजॉय इट इवन मोर. नंबर 6, ठीक है, ओके, नॉकिंग अ nail into a wooden block. Knocking a nail into a wooden block using a hammer. आपने एक हैमर लिया और आपके पास एक वुडन ब्लॉक है और आपने नेल को उसके अंदर नॉक करना. आप केमिकल से उसको उठाएंगे, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनटू काइनेटिक, इनटू हीट एंड साउंड. सो केमिकल potential energy is converted into gravitational potential energy, is converted into kinetic energy, is converted into sound energy in the air, plus heat energy in the nail, block, and hammer.